हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर सॉलिड स्टेट में कैलकुलेशन ऑफ स्पेसेज ऑक्यूपाइड टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता के बारे में चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसेज और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता होती क्या है। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particle is called packing efficiency. Or the fraction of total space, filled is called packing fraction. Filled is called packing fraction. यूनिट सेल में उसके घटक कणों के द्वारा यूनिट सेल का कितना परसेंटेज भाग भरा जाता है वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। हेडिंग है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी इन simple cubic cell or SCC. Suppose the age of length of unit cell is A. Suppose the length of age of unit cell equal to A and radius of sphere equal to R. As sphere are touching each other, then A equal to R. Number of spheres per unit cell, number of spheres per unit cell for SCC, that is Z equal 1. Volume of sphere equal 4 by 3 pi R cube. Volume of cell इक्वल A का क्यूब यानी कि 2R का होल क्यूब, दैट इज 8R क्यूब। देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय particle in unit cell upon volume of unit cell
that becomes 4 by 3 pi r cube upon 8 r cube, that is 4 by 3 into 8 pi r cube upon r cube से r cube गया, 4 into 3.14 upon 24, ये कट गया, ये आपका 3.16 upon 6 and it becomes 52.4%। तो दोस्तों हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 52.4% पार्ट जो है घेरा जाता है। तो उसमें जो है आपका जो वाइड स्पेस आ जाएगा, 100 में से 52.4% क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वाइड स्पेस हमें निकल जाएगी। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी in face centered cubic structure, that is FCC. As the sphere on the face is touching, as the sphere on the face is touching to nearest unit cell, then diagonal AC of unit cell becomes 4r, or it becomes a root 2. Then a root 2 equal 4r, then a equal 4r upon root 2, and number of sphere in FCC, that z equal to 4. Volume of 4 sphere of unit cell equal 4 by 3 into 4 into pi r cube, that is 16 upon 3 into 3.14 into r cube, and volume of unit cell equal a का क्यूब और a इक्वल 4r अपान रूट 2 है। 4r अपान रूट 2 का क्यूब, दैट इज 64r क्यूब अपान 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यह हो गया 32r क्यूब अपान रूट 2 हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अपान वॉल्यूम ऑफ unit cell into 100।
तो वॉल्यूम हो गया 16/3 इंटू 3.14 अपान आर क्यूब अपान 32 आर क्यूब अपान √2. It becomes 16/3 into √2 into 3.14 into r cube अपान 32 r क्यूब. r क्यूब से r क्यूब गया, 16 एकम 16, 16 दूना के 32. तो यह हो गया √2 इंटू 3.14 अपान 2 and into 100. It becomes 3.14 upon √2 into 100. That is 3.14 upon 1.14 into 100, and it becomes 0.74. 0.74 or 74%. Now we will see packing efficiency in body centered cubic structure. Packing efficiency in body centered cubic unit cell. As the sphere at the center, as the sphere at the center touches the sphere at the corner, touches the sphere at the corner, body diagonal equal 4r and face diagonal equal √2 and body diagonal a √3. So 4r equal a √3, then a equal 4r upon √3, and number of sphere in BCC, that is Z equal to 2, then volume of sphere in BCC equal 4/3 pi r cube into 2, that is 8/3 pi r cube, and volume of unit cell equal a cube or 4r upon √3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. ये हो जाएगा 64r cube upon 3√3. Then packing efficiency of unit BCC unit cell, volume occupied by sphere upon
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 and volume of sphere becomes 8/3 pi r cube and volume of unit cell 64 r cube upon 3 root 3. It becomes 8/3 into 3.14 into r cube upon 64 r cube into 3 root 3. आर क्यूब से आर क्यूब गया, 8 8 64 हो गया। ये आपका हो गया 3.14 अपान 24 into root 3 and it becomes 0.68 or 68%. Packing efficiency of BCC equal 48%. So friends, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में जो है आपको साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।